He- Hello student, welcome on my YouTube channel. Here we discussed of class 10 trigonometry. यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे. Trigonometry. Trigonometry means this one is a part of geometry. This one is a one side, now another side. This one is a next side. This is the three side. Three means try. Three sides of involvement in trigonometry. This one is a right angle triangle. In trigonometry, right angle triangle are used. This one is a 90 degree. This one is a base, perpendicular and hypotenuse. स्टूडेंट, आप लोग अपने घर में घर देखे होंगे, घर बनते हुए देखे होंगे, अपनी बॉडी को देखे. हमारी बॉडी किसी पे स्टैंड है ना, हमारे लेग पे, तो हमारा लेग क्या हो गया, बेस हो गया. सेम वे हमारा घर है, ये हाउस है, और हाउस भी किसी पे स्टैंड होता है. किस पे स्टैंड होता है, तो फाउंडेशन, यानी कि उसको बोलते हैं नींव. घर की नींव होती है, तो नींव ही क्या है, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की बेस है. सेम वे हमारे घर में पिलर्स होते हैं, जो पिलर्स ही हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है. नाउ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, नेम देम A B C. नाउ दिस इज अ थीटा 1 एंड दिस इज अ थीटा 2. दिस थीटा 1 इज अ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा 1 के सामने वाला, यानी किसी भी एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर. तो थीटा 1 के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी साइड एंड थीटा 2 के सामने परपेंडिकुलर बी सी साइड. इफ आई विल से थीटा 1 एंगल थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड ए बी एंड थीटा 2 perpendicular side BC. This is the basic concept of right angle triangle. In trigonometry, 6 ratios are used. 6 ratios are used. First one is a sin theta. Second one is a cos theta. Third one is a tan theta. Fourth one is a sin theta reciprocal is a 1 of cos sec theta. Fifth one is a sec theta and sixth one is a cot theta. These are the fundamental 6 ratio are used in trigonometry: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. So sin theta equal to 1 by cosec theta. Both are reciprocal to each other. Same way, cos theta is equal to 1 upon sec theta. Next, third one is a tan theta is equal to 1 upon cot theta. This is the formula of trigonometry. Sin theta is equal to 1 by cos theta is equal to 1 by sec theta, tan theta is equal to 1 by cos theta. If we cross multiplication, we get sin theta into cosec theta equal to 1. Same way, cos theta into sec theta equal to 1. Also, tan theta into cot theta equal to 1. Geometry, there is a right angle triangle. This one is a base. AB is a perpendicular. AC is a hypotenuse. We see that in फ्रंट ऑफ थीटा 1, किसी भी एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर. इफ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, BC. सेम वे थीटा 1 के सामने वाला तो AB. और हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो के यूज होते हैं, 6 रेशियो आर यूज्ड. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. हियर साइन थीटा इज अ reciprocal of 1 by cos theta. Cos theta is a reciprocal of 1 by sec theta. Tan theta is a reciprocal of 1 by cot theta. Some basic formula of trigonometric ratio. Some basic formula of trigonometric ratio.
So we see that in trigonometric right angle triangle are used, A, B, C. This one is a hypotenuse. This one is a perpendicular. And now BC is a base. So formula is here, sine theta equal to, sine theta is a trigonometric ratio. The ratio is the form of 1/2. This means the fraction form ratio is always. So sine theta is a trigonometric ratio. So sine theta formula equal to, sine theta equal to perpendicular by hypotenuse. This one is a perpendicular hypotenuse. Now cos theta is equal to base upon hypotenuse. Now third one is a tan theta is equal to perpendicular upon base. Fourth one is a cosec theta, and you may know about that cosec theta is the reciprocal of sine theta. So here sine theta, the cosec theta formula is a reciprocal, means hypotenuse is a numerator and perpendicular is a denominator. Now next, same way, sec theta equal to hypotenuse upon base. Now same way, cot theta equal to base upon perpendicular. Sixth form, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base, cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse upon base, cot theta is equal to base upon perpendicular. So perpendicular is defined by P, hypotenuse is H and base is a B. This is the highlight way. Hypotenuse is a H, base B, perpendicular is a P. So sin theta is equal to perpendicular denoted by P, hypotenuse by H, base is equal to B, hypotenuse by H, tan theta is equal to P by B, hypotenuse is equal to H by P, sec theta is equal to hypotenuse by base, or cot theta is equal to base by perpendicular. Everyone is in class 10th, everyone are new, so this is a new topic trigonometry introduced in class 10. Everyone worried about that, how to learn. So there is some trick to learn. So there is a Pandit Badri Prasad, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल. I repeat it one again. Pandit Badri Prasad बोल, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल. This one is a trick. Mean S is a sin theta is equal to P by H, cos theta is equal to base by hypotenuse, tan theta is equal to P by B. Or everyone know that other three ratio are reciprocal of our three ratio. Cosec theta is equal to H by P, sec theta is equal to H by B, cot theta is equal to B by P. सो स्टूडेंट, आप लोग ने ट्रिक लर्न कर लिए और देख लिए, अच्छे से समझ लिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का कैसा रिलेशन और कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. अब हम इसके लिए कोई एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. दिस वन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. और in previous class 8th 9th 6th 7th you know about very well Pythagoras theorem. If this one is a
3 and this one is a 4. तो what it B hypotenuse BC. तो by Pythagoras theorem. Pythagoras is a scientist. He introduced a theorem. So in theorem name before Pythagoras theorem. B hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू perpendicular square plus base square. So student, which one is a hypotenuse? तो BC is a hypotenuse, perpendicular AC is a perpendicular and base AB is a base. तो BC are find here. तो AC is a 3 given and AB is a 4 given here. 3 square 9, 4 square 16. तो BC square equal to, तो 16 और 9 25. Then BC equal to, here is a square, transfer of another side to become a square root. So BC equal to 5. Now here BC is equal to 5. अब here we introduce find six trigonometric ratio. The first one is a sin theta. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. और आप लोग ट्रिक से क्या लर्न किए हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो इसको हम क्या लिखेंगे? P/H. तो P वैल्यू इज हियर 3 and H is 5. तो sin theta is equal to 3/5. Same way cos theta is equal to base by hypotenuse. तो base equal to 4. Hypotenuse here 5 यानी 4/5. Third one is a tan theta. Tan theta equal to perpendicular upon base. This perpendicular is here 3 and base is here 4. So we find 3 ratio are here. Sin theta is equal to 3/5, cos theta is equal to 4/5, tan theta is equal to 3/5. Now fourth one is a cosec theta. Cosec theta is a reciprocal of 1/sin theta. So his value is 3/5. His reciprocal is 5/3. Same way cos theta is equal to 4/5. Sec theta is equal to 5/4. Now tan theta is equal to 3/4. Cot theta is equal to, अब ये हम नहीं बताएंगे, ये सब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए आंसर. देखते हैं कौन फटाफट आंसर लिखता है. और मैं आज यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन किया. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन और कैसे कैसे आएंगे वो एक्सप्लेन करूँगी.